Welcome at Newcastle Training Center. This is your trainer Shahzad Anwar. In today's session, we're going to talk about automated serial numbers in Excel. Excel में numbers, dates, etc. इनको आप कैसे automatically create कर सकते हैं with the minimal effort. Okay, so let's look at that. Suppose this is our sales data again, और इस sales data में हम यहाँ पे sales serial numbers create करना चाहते हैं. So let's insert a column on the right of A. So click on column A and then right click and insert. Now we have got column. इसका नाम हम देते हैं serial number. Now let's create the serial numbers. और इस पे format के लिए apply करते हैं. Format painter से here we go. Now we create the serial numbers. Let's say serial number 1 and 2. और अभी आप इन दोनों को 1 और 2 को select कर लीजिए. Select करने के बाद फाइल हैंडल है ये इसको हैंडल बोलते हैं. हैंडल पे आप डबल क्लिक कीजिए तो ये serial numbers onwards आपने देखा कि end तक automatically till the end of the data automatically ये serial numbers create हो चुके हैं. ठीक है. और अगर आपके पास कोई और सीरीज है आपकी, let's say आप Dubai 1, let's say Dubai 2, कुछ इस तरह के आपके सीरियल्स हैं. You select these two and append. So आपने देखा कि Dubai वो भी append हो गया and the serial numbers are created. Right? Another situation can be कि आप A, B, C इस तरीके से आप append करना चाहते हैं serial numbers को. So you type A1, A2 and select these two and double click on the handle. So A serial numbers are automatically created. Right? Control N कीजिए till the end of your day. Right? So ये ways हैं. Likewise अगर आपके पास date है, date कैसे आप लेते हैं? Let's say आपके पास date है 01/01/2018 and then अगर आप इसी को डबल क्लिक कर देंगे तो सब जगहों पे वही आपकी एक डेट 1, 2, 3, 4 आपने देखा automatically rather from 1st January onwards and then February starts and then March starts and then April starts. So आपकी date automatically append होती है. Okay. Likewise you can do Jan and Feb. That's why if the Jan and Feb select these both, double click on the handle. Oh, that gets automatically generated. Okay. और December के बाद फिर Jan Feb शुरू हो जाएगा. Like that. You see, so these are all the possible options in Excel कि quickly जिससे आप अपने serial numbers को generate कर सकते हैं. Another idea is like आप 2018 के numbers generate करना चाहते हैं. So 2018 and this is sale 1. Then 2018 and this is sale 2. Now select these two and double click. So 2018 की sales S1, S2, S3 and so on will generate. So you see there are many different logic stages that Excel में numbers automatically generate हो जाते हैं. ठीक है? So more trainings are coming up and we see you all there in the trainings. That's all for now.